एंड इंडिया टुक अ लीड इन दैट आर्ग्यूमेंट, आई वुड से. उसको आप लोग और डिटेल में गूगल पे पढ़ सकते हैं. बट बेसिकली व्हाट इंडिया सेड वाज, क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन यूनियन, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, एंड इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर इंडिया टू जनरेट दैट काइंड ऑफ money. Therefore, countries like US, UK should start giving the money so that ये जो gap है between rich and poor country ये club हो सके, ये बंद हो सके, right? And you will be surprised to know, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, कि पिछले 10 साल से इस बात पे बात चल रही है. हर मीटिंग में, हर इंटरनेशनल ग्रुप की मीटिंग में ये बात होती है कि यूएस को और यूके जैसी बड़ी कंट्रीज को पैसा देना चाहिए, बट वो नहीं दे रहे. एंड दिस हैज़ बीन द स्टेट फॉर 10-12 years नाउ. और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, बट स्टिल पैसा अभी तक अमीर कंट्री जितनी भी हैं वो देने में असफल रही है. एंड दैट इज वेयर ग्रुप्स लाइक G20 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो जब मैं बात कर रहा था कि G20 का जो एक आउटकम, अगर जिसको हम बोलेंगे, कि अक्सर ये भी मैं थोड़ा सा एक कैविएट देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि G20 हो रहा है उससे हमें क्या, राइट? हम तो एक साधारण इंसान है, वी आर जस्ट अ लेमैन सिटीजन, वी आर अ स्टूडेंट, G20 से हमें क्या होगा? So I'll tell you in the later slide how does it affect everyone, including individuals like us. But उससे पहले I'll just talk in brief about what G20 meeting was able to achieve. And these are all very important points because जैसा हम context setting में भी बात करते हैं कि climate change बहुत बड़ा focus था G20 grouping का. एंड अगर आप G20 अग्रीमेंट का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उस टेक्स्ट में 80% जो टेक्स्ट है वो क्लाइमेट चेंज की ही बात कर रहा है एक्चुअली. तो ये सारे पॉइंटर्स वहीं से ही मैंने निकाले हैं. सो नंबर 1 इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, राइट? आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट बायोफ्यूल इज. तो हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल पंप्स में, दैट इज पार्ट ऑफ बायोफ्यूल, राइट? बायोगैस की अगर हम बात करें तो दैट इज बायोफ्यूल. और ये सारे जो फ्यूल्स हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, ये एक तरीके से आपके क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं. क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है पेट्रोल डीजल अगर हम जलाएंगे तो उससे ज़्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं और उससे ज़्यादा हमारे अर्थ को हानि पहुंचती है कंपेयर टू अ अल्टरनेटिव फ्यूल लाइक एथेनॉल और बायोगैस और CNG फॉर दैट मैटर, राइट? सो इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज हैव सेट अप दिस अलायंस कॉल्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे बायोफ्यूल की फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा. डिप्लॉय मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और इंडिया पे इस पर ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है. कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ा बायोफ्यूल का सेंटर महाराष्ट्र में इनॉग्रेट भी किया है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट फैसिलिटीज इन इंडिया जो कि बायोफ्यूल के ब्लेंडिंग पे काम करेगी. सो दैट इज वन मेजर आउटपुट. एंड जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसने इस स्टेप को बहुत पॉजिटिवली लिया है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज वन ऑफ द major breakthroughs of G20 meeting, and maybe in future global biofuel alliance might end up facilitating transition away from the fossil fuels. तो जो हमारे fossil fuels जिनको हम डीजल, पेट्रोल या कोल बोल लें, तो उससे हमें स्मूथली ट्रांजिशन करवा पाएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ऐसा लोगों का मानना है. Then another important thing is, again ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था कि जितने भी G20 नेशंस हैं उन्होंने 100% अग्री किया है कि 2030 तक ये सारे के सारे नेशंस अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे. तो आज अगर लेट्स से इंडिया 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2030 तक वो 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का उसने प्रॉमिस किया है. सिमिलरली यूएस, चाइना, जो भी G20 का पार्ट है, एवरी कंट्री हैज काइंड ऑफ अग्रीड to triple the production of renewable energy, which is massive. And why it is massive, especially for India, वो मैं भी आगे फिर आपको बताऊंगा. So you can इन pointers को आप अपने दिमाग में रख सकते हो because इनको मैं आगे continue करूंगा. Climate finance, as I told you, it's a very tricky subject. अब again as a country, as a PM मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं अपनी renewable energy को triple करूंगा और quadruple करूंगा, बट मेरे पास अगर पैसे नहीं है, how will I do that, right? How do I attract investors? मैं उनको ज़मीन कहाँ से दूंगा, मैं उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से लाके दूंगा, राइट? सो दैट इज वेयर क्लाइमेट फाइनेंस कम्स इनटू पिक्चर. क्लाइमेट फाइनेंस, एज आई टोल्ड, is again very much dominated by the countries in global north, which are US, UK. इसलिए आप कोई भी ट्रेडिशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस देखें, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट? ये सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये
इनके जो लेंडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पैसा देने के जो नियम कानून होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. अगेन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन यूनियन, कभी कभार वो टर्म्स बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाते हैं, बिकॉज आपकी कंट्री की उतनी जीडीपी नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, एंड सडनली देयर इज दिस लोन ऑन यू, जो आपको एक रिन्यूएबल फैसिलिटी या सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया था बाय वर्ल्ड बैंक, बट सडनली उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया कि नाउ एज अ कंट्री आर अनेबल टू पे इट, राइट. सो इस पे भी इंडिया ने अलॉन्ग विद अदर ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैव सेड कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने चाहिए, और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे डेवलपमेंट बैंक्स पैसा देते हैं उनको भी हमें एक तरीके से रिवाइज करना चाहिए. सिंपल क्रक्स अगर मैं उसका समझाऊं तो. देन ग्रीन हाइड्रोजन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इनटू टेक्नोलॉजी या इस टाइप की चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज बीइंग सेड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट को हेल्प करेगी. ठीक है. ग्रीन हाइड्रोजन अगेन उसको मैं, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट इट्स अ न्यू एनर्जी, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी जो कि वाटर के कैटलिक ट्रीटमेंट के बेसिस पे बनती है. अगेन उसको आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म उसका समझना है. बट बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन इज द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. मतलब सोलर एनर्जी की अगर आप बात करें तो उसमें आपके जो पैनल्स निकलते हैं वो कचड़े के तौर पे निकलते हैं, राइट. विंड एनर्जी की बात करें तो जो विंड फार्म, जो विंड मिल होता है वो आपका अगर खराब हो गया तो वो एज अ कचड़े के तौर पे निकलता है. बेसिकली कहने की बात ये कि कुछ ना कुछ पीछे बचता है. ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कुछ भी रेसिड्यू, not even 1% will it will leave behind, so it will practically have a zero impact on environment. तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया विल स्टार्ट एन इनोवेशन सेंटर एंड इट इज ऑलरेडी अंडरवे. लॉट ऑफ टेंडर्स हैव बीन फ्लोटेड, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी बाय द वे. एंड देन लास्ट इज ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस मीटिंग, जहाँ पे ये बोला गया कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं फॉर सम रीजन, फॉरेस्ट फायर लग गई, जल गए, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरीके से कुछ ऐसा फ्लड आया या कुछ ऐसा हुआ कि वो फॉरेस्ट अगर बर्बाद हो गया तो उसको हम रिवाइव करेंगे. सो बाय 2030 ऐसे फॉरेस्ट जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं उनको रिवाइव किया जाएगा बाय 2030. ये भी हमारा ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में G20 में अग्री होगा. So another interesting thing that I was telling you about G20 New Delhi declaration was कि आज तक G20 की मीटिंग्स में कोई भी डिक्लेरेशन, जिसको हम अग्रीमेंट भी बोलते हैं, आप उसको ट्रीटी भी बोल सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट ट्रीटी, बट हाँ कुछ लोग उसको ट्रीटी भी बोल देते हैं. सो जो ये G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये पहला ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें 100% कंसेंसस लोगों का आया है. सारी की सारी 20 की 20 पार्टीज ने 100% यूनानिमसली अग्री करा है कि जो भी इसमें लिखा गया है, जो भी इस डॉक्यूमेंट पे लिखा है, हम उससे 100% अग्री करते हैं. आज तक ये G20 किसी भी मीटिंग में नहीं हुआ है. So just give me a second, I'll have water please. So now अगर हम, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हैं, and we are also looking at different climate change initiatives that have happened through G20 and beyond. So it is also very important to understand why, right? Because most of you are learning economics, right? Economics is mostly concerned with the market, with the money. So some of you might think and question कि यार ये हम climate की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, right? या climate अभी यहाँ पे इतना important क्यों है? Because we are talking about G20, right? So these are the three simple pointers through which I like to explain कि why climate change, why energy security takes center stage when we talk about meetings like G20. Number one is international cooperation, right? So now India ने बहुत conveniently एक पोजीशन अपने लिए assume करी है, और people are appreciating that position of India कि जो global south की जिम्मेदारी है वो इंडिया ने अपने कंधों के ऊपर ली है. So the very act of including African Union into the G20 was symbolic of the fact कि India is speaking for global south, right? And as I've explained earlier, global south is nothing but developing countries का जो grouping है, या जो developing countries है, उनको collectively global south बोला जाता है. And it is also understandable in a fact कि resources कम है हमारे पास financial means कम है, and we are not as powerful as US or UK for that matter, right? So when you are in a international setting, when you are interacting with lot of countries, and उसमें बहुत सारी countries आपसे ज़्यादा strong है financially, militarily terms में, so then international cooperation becomes very important, right?
And that is where India through G20 has kind of solidified its position by taking the stand that we'll speak not just for ourselves, we'll not just talk about India, but we'll talk about global South at large. We'll talk about those small countries which do not have that enough financial power. We'll talk about those countries who do not have enough technology to kind of combat climate change or other challenges. And that is where we are coming from. And most of the people in the global community has kind of resonated with the stance that India has taken, especially during the G20 meeting. Okay. एंड जब आप ऐसा करते हो, जब आप एक रीजन के बारे में बोल रहे हो या रीजन के बिहाफ में बोल रहे हो, तब आपको इस पे ये भी देखना होता है कि आपका जो फाइनेंस जैसे इश्यूज हैं, सप्लाई चेन जैसे इश्यूज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे इश्यूज हैं, इनको आप किस हद तक एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने में सक्सीड हो रहे हो, राइट? बिकॉज एज आई सेड, इफ देयर विल बी नो फाइनेंस, then no matter how much you talk about climate change mitigation, you won't be able to implement it, right? Again, why we are talking about supply chains? Because during COVID-19 हमने देख लिया था कि सारी supply chains जो थी सब disrupt हो चुकी थी, right? इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, सेमीकंडक्टर्स. उस समय रिमेंबर जो ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री थी, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर्स का कार इंडस्ट्री के ऊपर आया था. सो पीपल एट दैट टाइम जो बुक कर रहे थे अपनी कार्स को, उनको 6-6, 7-7, 8-8 महीने बाद कार मिली, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स जो थी उस समय अवेलेबल ही नहीं थी. ऐसा नहीं थी कि वो बन नहीं रही थी, बन रही थी, बट दे वर नॉट बीइंग एबल टू व्हाटएवर कम टू इंडिया और अदर कंट्रीज, बिकॉज सप्लाई चेन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो ग्लोबल मीटिंग्स, G20 जैसी मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है. सो दैट इज वाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें क्लाइमेट चेंज अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, एज आई टोल्ड यू राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में सिविल अनरेस्ट हो रहा है. श्रीलंका में हमने देखा था पिछले साल सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया था, राइट? पाकिस्तान का अगर आप एग्जांपल लें, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है इस समय, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है. तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे हर कंट्री की जो डायनेमिक्स है डोमेस्टिकली तो चेंज हो ही रही है, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, either due to a war or due to an economic condition or due to some kind of other crisis. At that time, it is very important how you balance your strategic needs, which includes your energy security. I'll give you a very small example. Russia-Ukraine के बीच में war चल रहा था. Russia inflated its oil cost because Russia के पास सबसे ज़्यादा oil reserves है. Russia सबसे ज़्यादा, most of the countries take their oil from Russia, right? तो जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, रशिया ने अपने प्राइसेस इन्फ्लेट कर दिया, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे उन कंट्रीज पे आया जो उनसे ऑयल परचेज करती हैं, राइट? सो इमेजिन दिस सिनेरियो, मतलब मैं सिर्फ इमेजिन करने को आपको बोल रहा हूँ कि आज जो आपका पेट्रोल या ऑयल लाने में जो बिल है, दैट इज 10 times मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी 2 years बिफोर, राइट? तो कोई भी कंट्री ये सोचेगी कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूं, मैं अपनी खुद की capacities ऐसे build करूं. Happened, this much progress has not happened. If it has not happened, why? If it has happened, why? And maybe then all the leaders can come together, they can join the dots, and then future strategy can be evolved. So most of the points I've already touched upon, but I'll just quickly run through them. So I was preparing for the session today, so at that time I was reading. So I don't know how many of you know, but India is actually well beyond its commitment of installing the renewable energy, right? तो इंडिया ने कमिट किया था कि हम 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे, एंड आई थिंक राइट नाउ इंडिया हैज काइंड ऑफ एक्सीडेड दैट. सो दैट सक्सेस स्टोरी इज रियली अमेजिंग. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आपको टाइम मिले, डू गो एंड रीड कि हाउ इंडिया हैज बीन एबल टू install renewable energy in the last 2 or 3 years, how it has been able to attract one of the finest investors in renewable energy, grant them good projects, and today India is on track to achieve the targets of renewable energy which it has committed for. And it becomes even more important to highlight this point because countries like US और UK, जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, जिनके पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को मीट करने में नाकामयाब रहे हैं. दे हैवंट बीन एबल टू फुलफिल दोज टारगेट्स. उसको देखते हुए इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है, दैट हैज़ बीन tremendous and something worth acknowledging. That is why my first pointer in this slide says India's clean energy story. Second, India's commitment to net zero targets. तो एक्चुअली इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझाना भूल गया.
आई एम श्योर आप लोगों ने टर्म सुना होगा जस्ट ट्रांजिशन, इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, न्यूज़पेपर्स आप खोलोगे तो वो जस्ट ट्रांजिशन वर्ड आपको बहुत बार दिखेगा. जस्ट ट्रांजिशन इज नथिंग, बट जब भी आप बोलेंगे कि नेट जीरो हम 2070 तक हम नेट जीरो होना चाहते हैं, उसके लिए आपको जस्ट ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा. जस्ट ट्रांजिशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम कार्बन बेस्ड सिस्टम्स टू नॉन कार्बन बेस्ड सिस्टम्स, राइट. कार्बन बेस्ड सिस्टम्स आपके क्या हो गए, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सारे कार्बन बेस्ड सिस्टम है. तो जैसे ही आपकी कंट्री ये डिसाइड कर ले कि अब हम इन कार्बन इंटेंसिव सोर्सेज से नॉन कार्बन इंटेंसिव सोर्सेज पे मूव करेंगे, विच आर सोलर, विंड, हाइडल वाटर, ग्रीन हाइड्रोजन, इनको हम नॉन कार्बन सोर्सेज बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन. से बेसिकली कार्बन सिस्टम से आप नॉन कार्बन सिस्टम्स पे मूव कर रहे हैं. तो इंडिया ने कभी भी ग्लोबल स्टेज पे कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो, COP26 हो, G20 हो, कभी भी कहीं पे भी इस पे पीछे नहीं हटी इंडिया कि हम नेट जीरो टारगेट के लिए कमिट नहीं करेंगे. हाँ, इंडिया ने ये बोला कि सारी कंट्रीज 2050 के लिए कमिट कर रही है कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे. इंडिया ने बोला हम 2050 तक नहीं हो सकते बिकॉज हमारी अपनी डेवलपमेंट नीड्स हैं, हम 2070 तक होंगे. सो आज इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है नेट जीरो पे वो ये है कि हम नेट जीरो 2070 तक बन जाएंगे. एंड दिस हैपेंड व्हेन लॉट ऑफ कंट्रीज वर नॉट विलिंग टू कमिट. चाइना कमिट भी नहीं करना चाह रहा था कि आप बताइए कि आप नेट जीरो कब होंगे. चाइना ने मना कर दिया था कि वी वोंट बी एबल टू गिव यू अ टाइमलाइन, प्लस वी आर नॉट श्योर इफ यू वांट टू गिव दैट कमिटमेंट राइट नाउ. आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया स्टेप अप एंड सेड कि वी विल बी going to net zero goal by 2070. So that shows that India has always been open to climate change and acknowledges that as a problem and has always been ready to find solutions to it. Third is consensus on G20 New Delhi declarations. As I told you, this was a very rare moment in the history of international negotiations, in the history of international politics, कि कहीं पे एक international grouping पे 100% consensus आया हो. वो इस मीटिंग में आया, and India was the first country to do so. So that is what I've mentioned in point number 3. Point number 4, again, as I told you, India has assumed this position of becoming a voice for global South. और इस कारण पहली बार अफ्रीकन यूनियन का भी इंक्लूजन G20 में हुआ. तो अब अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन को मिला के 19 और कंट्रीज हैं हमारी इस G20 की क्लबिंग में. सो इंडिया वॉज अपलॉडेड फॉर द फैक्ट कि इट ब्रॉट अफ्रीका ऑल्सो इन द ग्रुपिंग, राइट. And spotlighting One Health agenda. So if you look at this slide, so I've written One Earth, One Family, One Future. So I think for a very long time, global community has said, or has not said basically, but global community has struggled to understand कि climate change, energy security, war, इन सब का impact हमारे health पे भी होता है, human health पे भी होता है, right? आज इसराइल पैलेस्टीन में जो वॉर हो रहा है, वी कीप सीइंग हॉरिफिक इमेजेस फ्रॉम बोथ द कंट्रीज कि वहाँ पे जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, राइट. सिमिलरली अगर आप अफ्रीका की बहुत पुरानी फोटोज, अभी तो खैर सिचुएशन ठीक है, बट उस समय की अगर आप फोटोज देखें तो जब सूखा पड़ता था अफ्रीका में तो वहाँ की फोटोज आती थी कि वहाँ पे कैसे घर जो हैं वो ऐसे बंजर रेगिस्तान के बीच में बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, राइट. अभी भी वहाँ पे इबोला क्राइसिस जब आती तो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे बेड्स पे लेटे होते हैं, राइट. So India basically also highlighted in G20 the interlinkages between the climate and health. और इन दोनों को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं. अगर क्लाइमेट खराब होगा हमारी हेल्थ खराब होगी, अगर हमारी हेल्थ खराब होगी तो ऑब्वियसली उसके अदर इम्प्लीकेशंस हमारे सिस्टम पे पड़ेंगे. सो आई थिंक वन हेल्थ एजेंडा वाज द फर्स्ट टाइम G20 में किसी कंट्री ने वन हेल्थ के एजेंडा को भी एक तरीके से स्पॉटलाइट किया. Time check. Okay, cool. So looking at the kind of challenges that we have for India right now, so I would say आप लोग को भी चीज़ फील होती होगी, lot of people say this in general sense also कि India has kind of emerged as a favorite country in a global or a foreign policy landscape right now. बट कितने टाइम तक आप उस पोजीशन को होल्ड करके रखोगे इज एक्चुअली अ चैलेंज, राइट. सो फॉरेन पॉलिसी में एवरीथिंग इज वेरी kind of dynamic, right? So for how long will you be able to hold on to that position is the question. So right now the biggest challenge for India is to actually hold on to that position and say that okay, we'll continue to do the things that we're doing. We'll continue to speak for global south. We'll continue to speak for countries that are not developed, and we'll continue to hold countries accountable for the kind of work they are doing, right? No matter how powerful they are, but we'll continue to do that is the main challenge for India right now. China, as we all know, a lot of stories about China.
कि how it has become an economic superpower, how it has become a superpower in terms of military and all of that. And we are already seeing the example of it in Ladakh, right? So, how to actually tackle China's growth and influence, especially in the region where we are situated, right? Asia or South Asia, or whatever uh, uh, term you use for it. But basically, to counter China's influence is the another major challenge for India if it wants to keep succeeding in terms of meetings like it did this time in terms of G20, right? Then, as I told you, rich versus poor, right to develop versus right to clean environment, global south versus global north. These are all same stories, different names. So basically, how should India uh, react to this debate of right to development versus right to clean environment? Because यूएस हमेशा ये बोलता है कि ठीक है आप डेवलप करिए बट आपको इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा. इंडिया हमेशा ये बोलता है कि भाई अभी तो हम डेवलप हुए नहीं है, हमें डेवलप होना है. सो हमारा राइट टू डेवलपमेंट कम्स ऑन द टॉप ऑफ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. सही कौन है गलत कौन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज बिकॉज दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज ऑफिशियल्स एंड कंट्रीज लीडर्स to look at this debate of right to development versus right to clean environment. And then again, as I told you कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के टर्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. बट हाउ टू कीप दैट गोइंग, हाउ टू मेक श्योर कि हम और रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करते जाएं एंड वी स्केल दैट अप is another challenge. And lastly, just transition, as I explained you, moving from carbon sources to non-carbon sources, वो कितना फेयर होगा, कितना इंक्लूसिव होगा. इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आज भी 70% 80% ऑफ जो लाइवलीहुड्स हैं एनर्जी सेक्टर में वो कोल डिपेंडेंट लाइवलीहुड्स हैं, राइट. झारखंड, बिहार, ऐसे राज्यों में आप जाएंगे तो बहुत सारे जो मजदूर हैं वो कोल की माइनिंग में ही इन्वॉल्व है. तो आज अगर आप कोल बंद करते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम कोल को हटा रहे हैं पूरी तरीके से अपनी सप्लाई चेन से, देन हाउ विल यू मेक श्योर कि वो जो वर्कफोर्स है 70-80% वाला, उसको आप कहीं और किसी और बेटर लाइवलीहुड में इंटीग्रेट कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय ensuring fair and inclusive just transition. So sorry, I'm just running through the slides because I think it's already 3:50 and maybe I'll take some questions. So I'm just running through this slide, right? So what can be your role? So I'll just quickly talk about what we are doing and then we'll quickly go for question answer session. So so we have been working in public policy sector for last couple of years. We work with UN agencies, we work with government, we work with central government, we work with a lot of think tanks, advocacy groups, right? So we realize this problem that from cities like Bhopal or Indore, Sagar और भी छोटे शहर आप अगर मध्य प्रदेश के ले लें, छिंदवाड़ा, बैतूल और जो भी आपके दिमाग में से छोटे शहर आ रहे हैं, इनसे कितने बच्चे हैं जो पब्लिक पॉलिसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट? या कितने बच्चे ऐसे हैं जो पब्लिक पॉलिसी में एक अच्छा अपने लिए काम तलाशना चाहते हैं. जब हमने वो एक्सरसाइज करी, जब हमने कुछ लोगों से बात करी, वी गॉट टू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ किड्स जिस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कंसल्टिंग स्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट? उसमें भी मोस्टली लोगों को लगता है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द वेज, बट आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि यूपीएससी का सक्सेस रेट क्या है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट, बट इन जनरल सेंस हमें पता है कि यूपीएससी कितना टफ होता है, राइट? A lot of people are interested in doing their own startups. A lot of people are interested in going into politics, but उनको समझ में नहीं आता. उनको लगता है यार मेरी फैमिली में तो आज तक कोई politician नहीं रहा, मैं कैसे politics में start करूँ? So the reason of sharing these questions with you here is that we have a public policy education program. वो हमने इसी साल शुरू करा and we are getting a very good response. इसमें we go and interact with students like yourself. And इसमें इसके बाद जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं अपना करियर पब्लिक पॉलिसी में बनाने में, कंसल्टिंग स्पेस में अपना करियर बनाने के लिए, उनको भी provide mentorship and guidance. And we have different tools for doing that. We have resources, we have workshops, we have tools and different designs, different methods for doing that. I'm not going that into right now because we have not much time left. But this is just to give you an idea that this is one program that we are running. And if in future I get an opportunity, maybe I'll do a separate session on this. But for now, it is important for you to understand that if you're interested in making a career for yourself in public policy, and if you feel that programs like G20 या और भी जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसमें आप भी जुड़ना चाहते हो, आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, कौन इनको रन करता है, इसको रन किया कैसे जाता है, then we are running this education program and we invite you to be a part of it. This is the QR code for you. You can scan it, or maybe I'll share this with Leslie ma'am
she can further share it with all of you. आप इसको देख सकते हो. This is the QR code for the community that we have designed. Already इसमें हमारे कुछ लोग members बने हुए, and we keep sharing different resources, different opportunities for students. But this is something that we have started for students like yourself, and we invite all of you to be a part of it. And if there's anything else that you feel you want to discuss or reach out or talk to, then this is my contact detail, and you can reach out to me whenever you want. We are also based out of Bhopal, so we stay in Kular Road. So whenever you have time or you feel like coming and talking to us, feel free to do that. So with this, I'll stop sharing my screen, and yeah, I'll take questions if there are any. Or yeah, so over to you, Kushkirat. Yeah. Yes, sir. So I guess Asma, you said I got my doubt cleared. Okay, great. So yeah, any other questions or thoughts, comments, or anything in general that you would like to ask? Feel free to like unmute yourself or maybe drop in question in the chat box. Sir, in the chat box, one wrote that her doubt got cleared while you were explaining. Yeah, I think Asma has mentioned that. So I think great. Anyone else? Any questions? Or was the presentation super boring, super technical? Anything that you didn't understand? I think we have 10 minutes so we can discuss any other thing that you want to. Okay, great. So I don't think there are any questions. Okay. What can be the barrier of policy formulation in poor countries? Okay, that's a good question, Lokesh. Thanks. So I'll take that up. So Lokesh, see, there are a lot of uh, um limitations when it comes to countries who have very less resources, right? And let's put it this way: that they're not poor countries; they are less developed countries. So I mean, I'm sorry I use that word rich and poor, but that's how academicians use it. So let's call them developing countries. So see, when you're a developing country, you have a lot of limitations, right? You don't have that much of financial resource. Plus, your negotiation power is very limited, right? Because you're not US, you're not UK, that everybody will listen to you at an international forum, or a forum like World Bank or UN is going to pay attention to you because you're not US. So whenever you are in that situation, when you have resources and you have, yeah. So Rishika, maybe you can go once I answer, complete my answer, right? So you can maybe go ahead and unmute yourself and speak. So whenever countries have less resources, so they struggle on a lot of fronts. It is in terms of international negotiations that they find hard to convince their partners, to convince other member countries. They find it hard to get proper partners, right, to run programs and to run initiatives that can help them come out of the crisis that they are facing. Financial resources, obviously, that's a definite yes. Because again, as I said, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप किस टाइप के programs बनाओगे, किस तरह के interventions design करोगे, right? So I think, and also your political power decreases, because when you're a developing country, your political power or your policy, buy-in also kind of decreases. So these are the factors that kind of come into picture, or that come into play. And उसके अलावा यार, then there are a lot of factors. Geopolitical issues होते हैं, economic issues होते हैं, market stability कितनी है. So all those are also issues that come into kind of play. But मोटा मोटा यही है कि they kind of face problem in terms of the negotiation and political value, right? So I hope that answers your question, Lokesh. Yeah, so I think somebody raised their hand, Rishika Pillai, if I remember it correctly. Kushkirat, can they unmute and they ask a question?
Yes, sir. Sir, I would request you to please check the text box. Romin has asked a question. Should I read it out for So you? continuing from the previous question, implementation of policies in poor countries have many hurdles. How can these processes be more transparent, ensuring equitable distribution of resources? So, Romir, I think ये काम अभी तक यूएन एजेंसीज भी नहीं कर पाई है, राइट? सो दिस इज नॉट टू से दैट कि नहीं हो सकता है, सो डोंट टेक मी रॉन्ग, but it's a very difficult job here because see, at the end of the day, when we talk about international policy making, or when we talk about international law, that's the negative, or I would say the downside of it, कि कोई accountability नहीं है, right? So today, if India is organizing G20 and I am a representative of China, I'm coming, I'm staying here for whatever 2 3 days. I'm getting hosted on states resources. I'll come and say official lines, whatever my my boss has told me to say. And after 3 days, I'll not even remember what I've said in G20. And this is a practical fact. That is how these meetings are actually done, right? Because there's so much happening, so much of engagement happening. It's very difficult to keep a track of what is next. So meetings like G20 should have some kind of a monitoring mechanism, I would say, because like this, it's only waste of resources. Because I'm sure you must have seen कि जब इतने सारे हेड्स आते हैं किसी स्टेट से, डेलीगेट आता है, तो बहुत सारा रिसोर्सेज लगता है उनको होस्ट करने में, राइट? एंड देन आफ्टर 3 days you don't even know what were the main discussion points and how to take it forward. Then basically whole accountability and the concept of monitoring goes into air, goes for a toss. So a lot of agencies, including UN, World Bank, is actually struggling to hold countries accountable for what they are supposed to do. And once they are held accountable for what they are supposed to do, then maybe you can come to the next point, which says equitable distribution of resources, right? Because I'll just take a minute and explain this concept in a better way. So US, UK, आपको पता होगा वो हमसे ज़्यादा पहले डेवलप हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हमसे पहले हुआ, राइट? अब क्योंकि वो हमसे पहले इंडस्ट्रियली डेवलप कर गए, तो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेंट टू देम, as a result of which you can clearly see जो आज एक power disbalance है, right? Those countries are more powerful in whatever terms you want to call them powerful, and the other countries are obviously less powerful, less developed compared to what US and UK are, right? And that's why global north, global south का बार बार debate आ जाता है. So to answer question shortly, monitoring mechanisms नहीं है, बनाने पड़ेंगे. Otherwise meetings like G20 are just talk shops, और उनको accountable कर पाना बहुत मुश्किल है. Okay, sir. Lokesh has again asked a question. How can an individual being on a student position can build policies for the country? So that's a very interesting question again, Lokesh. I think the very fact that you've shown your interest in building public policy for country is a very positive first step, I would say. So and see, everything is not should not be like big in terms of scale, right? Because abhi aap log student, obviously you can't be ambassador for a country, but the very fact that you're thinking to work in this space is a very big step, I would say. So I would say start exploring the options in public policy for yourself. Start reading more, start educating yourself in public policy, right? Because it's a very vast field, and today is just one topic that we have discussed, and that too it's just 1 hour, because I can't cover everything in 1 hour, but there are multiple layers to the topic that we just talked about, right? So if you want yourself to build a career in public policy, then you'll have to read a lot, you'll have to educate yourself, you'll have to find right opportunities, be it in terms of internship, be it in terms of career opportunities, be it in terms of jobs. You'll have to find the right networks, and actually that is what we are trying to do in the kind of community that we are setting up. So we try and provide students with the right mentorship, right guidance in terms of the career that they want to build in public policy space. So if you're interested, you should scout out for such groups. You should try and find out opportunities where you can learn more. Try and to do internships in this sector, and then eventually you should try and go for jobs if you're interested in this sector generally. Great. So I think we are done with the questions. Any other question? No, I can't see any other question. Yeah.
Cool. So we are 2 minutes past 4. It's okay, sir. So today, as we conclude this enlightening session, it is with immense gratitude that I, Khushkir Duggal, on behalf of the Department of Economics at the Bhopal School of Social Sciences, extend my heartfelt thanks to our panelist, Mr. Rishabh Srivastava, sir. Thank you, sir. From your expertise and experience, you have increased our knowledge horizon towards the very enlightened issue prevalent in the economy today. On behalf of the Department of Economics, I extend our sincere thanks to our respected Principal Dr. Father John BJ for always showing his constant support for conducting such commendable events for every student. I would like to extend our heartfelt appreciation to our Head of Department, Dr. Jyoti Mathur Ma'am, and faculty in charge, Ms. Leslie Sunny Ma'am, for conducting such an informative and valuable discussion for us. Your guidance and support have been instrumental in organizing this insightful session. Lastly, a sincere word of gratitude to our attentive student audience. Your active participation and engagement have made this session truly meaningful. Together, we have embarked on a journey of exploration and discovery, fueled by the expertise of Mr. Rishabh sir, the dedication of our facilities, and the eagerness of our student community. As we depart from this session, let us carry forward the wisdom shared today and continue to sow the seeds of progress and innovation on our journey forward. Thank you once again, everyone involved, for your invaluable contributions and unwavering commitment to excellence. Thank you. Thank you, Kushkirat. Thank you, everyone. Bye. Bye, sir. Thank you so much, sir. Listen, dear students, I hope that you all have filled the feedback form through which you will get the certificate form as well.